இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. சனாதனம்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது. சனாதனங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நிலையானது, அதாவது மாற்ற முடியாதது, யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் சனாதனத்திற்கு அர்த்தம். இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. अभी इंडी अलायंस 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं. इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए. Stalin Jr. has given out what appears to be a clarification on his Sanatana Dharma should be eradicated remark. Udayanidhi Stalin has said, and I quote him here, criticism was to eradicate the Sanatana ideology. Eradicate Sanatan does not mean I'm calling for a genocide. He basically then adds that even the Prime Minister says it's a Congress Mukt Bharat. Does that mean Congress party cadres will be caught and killed? Remember talking about religion in Tamil Nadu, where he is leading and is part of the DMK as a minister. Remember, he's in the government. And he says that the Hindu faith or the Sanatana Dharma must be eradicated because it is like a disease of dengue and malaria. நான் திருப்பும் சொல்றேன், நான் சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் விமர்சிச்சேன். சனாதன கோட்பாடுகளை நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன். அதை நான் பேசிட்டு தான் இருப்பேன். அதனால என்ன வழக்கு போட்டாலும் இதனால சந்திக்கிறேன். இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுமே அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கு, பேசணும். அதுக்காக தான் நான் பேசினேன். நேற்று பேசும்போதே நான் சொன்னேன், இந்த நிகழ்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கு, நான் இங்க பேசிட்டு இருக்கேன், நிறைய பேருக்கு வைத்தறிச்சல் வரும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அதனால நான் சொன்ன மாதிரி நடந்திருக்கு. நான் திருப்பும் சொல்றேன், நான் சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் விமர்சிச்சேன். சனாதன கோட்பாடுகளை நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன். அதை நான் பேசிட்டு தான் இருப்பேன். ரொம்ப பைத்தியகாரத்தனமா, ரொம்ப குழந்தைத்தனமா நான் ஜெனோசைடுலாம் இன்வைட் பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. ஒன்றிய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் காங்கிரஸ் முக்த் பாரதா அப்படின்னா அவர் என்ன காங்கிரஸ்காரெல்லாம் பிடிச்சி கொலை பண்ண போறாங்களா? நான் ஒரு கொள்கையை சனாதனம்னா என்ன, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதுவுமே மாறக்கூடாது, எல்லாமே நிலையானது அப்படின்னு சொல்றதுதான் சனாதனம் தான். அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்றாங்க. எல்லாத்திலையும் மாற்றம் ஏற்படணும், ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய திராவிட மாடல். எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்குங்கிறது தான் திராவிட மாடல். அதனால என்ன வழக்கு போட்டாலும் இதனால சந்திக்கிறேன்.
नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। Tamil Nadu BJP President K. Annamalai, if you have to eradicate Sanatana Dharma, you have to finish off all the temples and people's essential religious practices. The word Sanatana Dharma was there even before the Christian religion or Islamic religion came. Sanatana Dharma means eternal, timeless Dharma. It has been there for a long time. What Udhayanidhi spoke yesterday should be condemned by the 142 crore people of the country because hatred for a particular religion came out yesterday. He was reading the speech from a text, which was consciously prepared. The eradication of a particular culture is called genocide. Who is Udhayanidhi Stalin to abolish Sanatana Dharma? Looks like Udhayanidhi lost his faith on the Lord, within a span of 9 months. December 2022. I'm a proud Christian. In fact, I married a Christian girl. The 3rd of September 2023. I want to eradicate Hindu Sanatana Dharma. The 4th of September 2023. I'm an atheist. I don't believe in any religion or caste. Sanatana Dharma, in Hinduism, denotes the eternal or absolute set of duties, or religiously ordained practices, incumbent upon all Hindus, regardless of class, caste, or sect. Different texts give different lists of the duties, but in general, Sanatana Dharma consists of virtues such as honesty, refraining from injuring living beings, purity, goodwill, mercy, patience, forbearance, self-restraint, generosity, and asceticism. Sanatana Dharma is contrasted with Aisva Dharma, one's own duty, or the particular duties enjoined upon an individual, according to his or her class or caste and stage of life. The potential for conflict between the two types of Dharma, for example, between the particular duties of a warrior, and the general injunction to practice non-injury, is addressed in Hindu texts such as the Bhagavad Gita, where it is said that in such cases, Aisva Dharma must prevail. The term Sanatana Dharma has also more recently been used by Hindu leaders, reformers, and nationalists to refer to Hinduism as a unified world religion. Sanatana Dharma has thus become a synonym for the eternal truth and teachings of Hinduism, the latter conceived of as not only transcendent of history and unchanging, but also as indivisible and ultimately non-sectarian. Priyanka Chaturvedi of Shiv Sena brings it out clearly in her tweet. Sanatana Dharma stands for eternal truth, the way to live life, the conscience and being. Sanatanas have long withstood attacks by invaders to end their identity, yet, they have not just survived but thrived. The country's bedrock, which is linked to Sanatana Dharma, has been of inclusiveness of all faiths and identities. Anyone making derogatory comments against it is ignorant of what it stands for. எனக்கு எல்லா மதமும் ஒண்ணுதாங்க. நீங்க கிறிஸ்டியன் தான், நான் எனக்கு எந்த மதம் ஜாதி அதுல நம்பிக்கை கிடையாது. ஃபிளாஷ்பேக். இன்னும் சொல்ல போனா நானும் கிறிஸ்தவன் என்று சொல்வதற்கு நான் பெருமை கொள்கிறேன். நான் காதலித்து மணந்தது ஒரு கிறிஸ்தவ பெண். In Tamil Nadu, they don't follow Sanatana Dharma. We are all Hindus. In Tamil Nadu or anywhere, it was prior to the British who termed us as Hindus. Okay, so you're saying that Sanatana Dharma should be eradicated is a statement that the DMK will support. So you're saying Sanatana Dharma should be eradicated is a statement that the DMK will support. You're saying no hate speech in this. Absolutely, there is no hate speech. Sanatana Dharma reflects a casteist society where people are divided based on religion. Do you support that? Okay, Mr. Saravanan, I want to ask you, since the Congress party is the DMK's ally in Tamil Nadu and in the India Alliance as well, I want to ask you, is the Congress party also in support of this statement? Because we've heard Mr. Rahul Gandhi speak about not just Mohabbat ki Dukaan, he also speaks about being a Shiv Bhakt. See, you should ask this to the Congress party. Congress party also wants an egalitarian society. Everybody else. But it is the BJP which wants to maintain this caste hierarchy and keep oppressing people belonging to the SC, ST and the OBCs.
the Uddhav Sena has hit out at Udayanidhi Stalin, slamming Stalin Jr. for his Sanatan eradication remark. Uddhav Thackeray Sena has spoken about the fact that they are not going to be tolerating this insult to Sanatan Dharma. UBT Sena says Sanatan Dharma stands for eternal truth. I have a great regards for Tamil Nadu people, full of South India, and also Stalin ji also I respect him. But my humble request would be to them, every religions, they have their separate sentiment. What we say always that, if you divide my full body, it is different castes, different religions, and India is for that. India is a secular country, India is a democratic country, and at the same time unity in diversity is our origin. So I respect Sanatana Dharma because we know the Rig Ved, Atharva, so many Veds, and it came from our Upasana, Aradhana, Bandhana from then. And also Sanatana Dharma, I give them pension also because there are so many Purohit. They puja path जो करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, they do the pujas. So how it is popular, the Balapati is very popular in South India and all over the country. Now Siddhi Data Vinayak is popular in Maharashtra and all the country. Durga Puja is popular but belongs to every country. Now we go to mandir, masjid, temple, church, everywhere. We should not involve in any matter which may hurt any section of people. It may be he's a junior, so he may not be knowing that. But from my side, I can give my views that I also came to know this, but I do not know from which vision they have said so. I feel that they have to respect every religion. के परे कि आज जब हम लोग 21वीं सदी में हैं, क्या ये बातें राजनीतिक चर्चा का विषय होनी चाहिए? ऐसी बातों से समाज में सिर्फ बंटवारा होगा, समाज को सिर्फ ये बातें बांटती हैं। छोड़ दीजिए ना लोगों की व्यक्तिगत आस्था पर, किसको किस धर्म का पालन करना है, किसको किस धर्म का पालन नहीं करना है, कौन आस्तिक है, आस्तिक होकर कौन किस में आस्था रख रहा है, कौन नास्तिक रहना चाहता है, ये तमाम इंडिविजुअल कंसर्न्स हैं, ये व्यक्तिगत विचार हैं, और जिसको जिस विचार के साथ सहमति है उसको पूरी स्वतंत्रता है हमारे देश में। और यही सर्वधर्म सद्भावना की भावना होनी चाहिए, जहाँ पे सारे धर्मों का एक बराबर सम्मान किया जाए। ऐसे में जब आप ऐसी बातें बोलते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में असंतोष, समाज में बंटवारा करने का आप प्रयास करते हैं, लोगों की भावनाओं को, लोगों की आस्था के साथ आप खिलवाड़ करते हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। भारत विभिन्नताओं का देश है, यहाँ पर वेशभूषा से लेकर बोलचाली से लेकर अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, रीति रिवाज हैं, और हमारे देश ने हर किसी का सम्मान किया है। तो ऐसे में आप कौन होते हैं भैया इस बात को निर्धारित करने वाले कि कौन सा धर्म सही, कौन सा धर्म गलत? ये लोगों की आस्था पे छोड़ दीजिए ना। और इसमें कहीं ना कहीं जब राजनीतिक बयानबाजी आती है, ये समाज में और बड़े बंटवारे उत्पन्न करने का ये लोग कार्य करते हैं। किसी राजनेता को क्या जरूरत है किसी की भी आस्था से खिलवाड़ करने की? Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. हमारा व्यू वेरी क्लियर है, सर्व धर्म समभावना।
Sarva Dharma Sambhavana is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। I am deeply worried by the statement made by the son of the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, calling and comparing Sanatana Dharma with malaria, dengue, corona, and asking for it to be eliminated just like mosquitoes should be eliminated. For one, I think this kind of language in our discourse, in our political discourse, is absolutely unacceptable. Number two, I believe that while every way of life does require reform, those reforms must happen through legislation, through political movements, through dialogue, through conversation. You cannot call a group of people having a particular belief mosquitoes and call for elimination of that way of life. Shri Rahul Gandhi ji says that nafrat ke bazaar mein ve mohabbat ki dukaan kholne aaye hai. So my question is, does the India Alliance and other members accept this point of view? Simply because in the Indian context, if any way of life has seen maximum reform, it is the Hindu way of life. Let's look at it objectively. Is Bhagwan Ram a Brahmin? No. Is Bhagwan Krishna a Brahmin? No. So the Hindu way of life has seen maximum reform, and I'm saying that all ways of life must see reform. Let me twist this argument and ask, let's say hypothetically, a BJP chief minister's son or daughter, or a BJP member of parliament would have made a similar statement for the Muslim way of life, or Islam, or Christianity, or Sikhism. We would call it hate speech. And that is what the Honorable Supreme Court guidelines are in Tehseen Poonawalla versus Union of India, defining what is hate speech. Then how is this not hate speech? The Congress party itself has so many members who follow the Sanatana Dharma. Do they agree with what the son of the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu has said, or their own MP, the son of P. Chidambaram ji, has said in Tamil Nadu? So I think this clarification is required for supporters like me who support the India Alliance, and for people going forward, because we were told that this is about building bridges, not burning bridges. And I would like such a clarification to come out. I personally, as somebody who's fighting hate speech, am against this kind of language being used, and I think that this kind of language must be condemned. Once again, the India Alliance has shown its true face. Bharat Virodhi face, Hindu Virodhi face. DMK's leader Stalin, the statement he has made comparing Sanatana Dharma with diseases, and has also said that Sanatana Dharma should be terminated, should be finished, should be extinguished. This is nothing less than a genocidal call, and it has been supported by Karti Chidambaram of the Congress party. This shows the mindset of this alliance. It's not a one-off statement. Samajwadi Party says that Hindu Dharma is a dhoka. IUML had raised genocidal calls against Hindus in Kasaragod. MMK made a poster mocking Prabhu Shri Ram. We have seen the long history of Sanatan Virod by Congress party, doubting existence of Prabhu Shri Ram, opposing the Ram Mandir, Hindu terror, Hindu is a dirty word, and so on and so forth, which has even been described in Manishankar Iyer's book. The question is that is this Mohabbat ki dukaan or is this Nafrat ke bhaijan? They want to eradicate. If you have to eradicate Sanatana Dharma, you got to finish off all temples. You got to kill off people's cultural practice. You got to finish off people's essential religious practice. This goes very deep into it. Now, the word eradication of Sanatana Dharma, for some people it might look, people who follow DMK or who are aligned with their ideology, it might look very simple to them. But if you look at the what we in Tamil we call the Utporul, if you look at the inner meaning of what they are trying to convey, it is the essential, the government's attitude has come out very openly. Every day it comes out little bit here and there. But yesterday very clearly they made a policy statement that is DMK for you. And he had the temple administration minister along with him and the whole ideological people along with him. And he said like mosquito, like dengue, like COVID.
It has to be completely wiped off the face of earth. That shows the visceral hatred. जब भारतीय जनता पार्टी का किसी भी धर्म से भावनात्मक लगाव है ही नहीं, किसी धर्म में आस्था है ही नहीं, हर चीज की मार्केटिंग करते हैं, इसी प्रकार से ये सनातन शब्द की भी मार्केटिंग करते हैं। तो इस आशय में अगर केरल के मंत्री जी ने कुछ कहा है तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है? ये मार्केटिंग करें, ये मनमाना करें, ये देश की जनता की आग में धूल झोंकें, धर्म के नाम पर आस्था से खिलवाड़ करें, वो अच्छी बात है। तो स्वाभाविक रूप से इनकी नौटंकी का खुलासा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी संविधान में विश्वास रखती है, जिस संविधान में समानता की आदर्श उल्लेखित है। हम सभी कानून के सामने समान हैं और हम सभी भगवान के नज़रों में भी समान हैं। 82% अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता है? स्टालिन ने कहा कि कोरोना की तरह सनातन धर्म को भी खत्म कर देना चाहिए। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं हैं। Some political news now. DMK MP A. Raja has urged the centre not to force the DMK to revive the demand for a separate Tamil Nadu by denying it state autonomy. At a conference for a local body, representatives of DMK held in Namakkal on Sunday, A. Raja, in the presence of Chief Minister M.K. Stalin, urged the centre to grant Tamil Nadu state autonomy. We will not stop our fight until Tamil Nadu gets state autonomy. That is what he said. I'm quoting him there. This was said while he was delivering an address on the topic autonomy for states, federalism in centre. All right, this is the tweet later on that A. Raja in fact put out. He said, Chief Minister is travelling on Anna's way. Don't push us to Periyar's way. Don't leave us to ask for our own country. Give state autonomy. Until then, we will not rest. We have seen several India bloc leaders of the opposition closing ranks to allegedly slander Sanatana Dharma as a discriminatory religion, which must be eradicated. While such views were voiced by opposition satraps, they have given cover fire to the comments of Udayanidhi, calling it freedom of speech. We've also seen BJP on their part lashing out at top guns of India, asking if their silence is tacit endorsement of these anti-Hindu views, or is their silence reflective of their fear of alienating the Hindu vote ahead of the 2024 elections. It's a very sensitive matter. Hindus are very sensitive about Sanatana Dharma. I'm not sure that Udayanidhi Stalin did the right thing by making a comment. I think politicians should avoid comments on religious matters. क्यों नहीं सोनिया जी बोलती, क्यों नहीं राहुल जी बोलते कि सनातन धर्म के बारे में आपकी सोच क्या है? मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, गठबंधन में जितने लोग शामिल हैं, INDIA गठबंधन में, सबसे मैं कहना चाहूंगा, इसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो यह देश किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा। बहनों भाई, ये राजनीति के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे
कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात करेंगे। पूरे देश से इस गठबंधन के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। जो लोग मोहब्बत का दुकान खोलने के लिए उतारे हैं, उनका इस स्टेटमेंट के बारे में, इस स्टैंड के बारे में उनको क्या कहना है, ये लोग जानना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि क्या सनातन धर्म को गाली देना, हिंदू धर्म को गाली देना कांग्रेस पार्टी की नीति बनी हुई है? ये घमंडिया गठबंधन की नीति बनी हुई है? But days after his rant, Stalin's rant, Indian netas have finally started condemning his statement. Bengal Chief Minister Mamata Bandyopadhyay, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal said they don't agree to what he said and that Sanatan is eternal. Moreover, ISKCON, a religious outfit, has condemned Udaynidi's remarks and questioned why the Supreme Court was not taking suo motu cognizance of this. The BJP, however, is not budging and is firing back-to-back salvos at Udaynidhi Stalin. The Saffron Party even compared him to Hitler, saying that he gave a call for Hindu genocide. 262 prominent people wrote to the Chief Justice of India asking to take suo motu cognizance of Udaynidhi's remarks. मैं भी सनातन धर्म से हूँ, ये भी सनातन धर्म से, आप लोग भी, आप में से भी कई लोग सनातन धर्म के होंगे। मुझे लगता है हमें एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलना अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। एक दूसरे के, सबको एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। I feel that they have to respect every religion. Instead of saying condemn, my humble request to everybody that we should not comment anything which may hurt the major section or the small section of the people.